material science in Japan. Dr. Murugesan sir has published over 30 research papers in reputed journals and attended 45 national and international conferences where he received Sudarshan Bhatt, a memorial prize for Best Master Thesis at IIT Madras in 2006. Now, I would like to request Dr. Jayaprakash Murugesan sir to please come over to the stage and address the gathering. Thank you. Honorable Group Director and Director sir, Group Director sir, Guest of Honor, Coordinator, Professor Pandit sir, and Professor Karan, and Professor Karosa, Co-Coordinator, and Jody Mechanical, Professor Derivation, and all other students and staff. So very good morning to all. Morning, sir. I am pleased to be here for this inauguration ceremony from this factory on smart manufacturing tools and technology for industry so far. So first of all, I congratulate this Oriental Institute of Science and Technology Administration and also the course coordinator for organizing such a current relevant course related to industry. And also it is not only for industry, but also I think for students, it will enhance their job opportunities. And the course, I saw the course of the course. The course is designed in such a way that you can learn the fundamental things. And in addition to that, practical training also. And the course was taught by experts in the area related to industry and also related to software and this advanced manufacturing. And I also hear that in Oriental Institute, they have advanced facilities to train you practically in this advanced manufacturing techniques. And this is one of the reputed private institutes in Delhi. So you make use of this opportunity and learn. And so myself, I am working in the Department of Metallurgy Engineering Material Science. So my research area is mainly related to design of components against the failure for automobile, aerospace, and also turbines. And so in all this case, we need advanced simulation is required. Not only experiment, but also simulation is required. And also I am working related to this additive manufacturing. So 3D printing, and nowadays the solid state additive manufacturing. Okay, and for everything, the smart manufacturing is needed. And also the demand for the need of development in any area power sector or automotive never ends. Okay. So for example, in power sector, we need to generate more and more power. For that, we need to identify a technique to increase the performance of the engine. And also, for example, we go to aerospace sector, there is a need to develop lightweight structure. So everywhere for that, we need smart manufacturing. To reduce the weight, we need smart manufacturing techniques. And also we need to adapt, because many cases now advanced materials are developing with high strength and high durability. So the thing is, but it's costly. So we cannot waste things. So the thing is that, so we need to go for 3D printing or advanced things, so that we can reduce this wastage of the machining, something like that, and also we can make whatever the design we want.
I think this course, whatever this they conduct, they're going to organize, is this smart manufacturing tool is like very relevant to the current generation. So my submission is to all the participants is please learn and expertise in this area, and most of the participants are faculty. So you can widen your knowledge in this area, and you can share this to your students and train your students, and your students will get benefited. They can get and they will join in some industry, and that industry will get benefited. So it will raise our industrial thing and also our national economy. Okay. So my best wishes for the success of this program. So I thank you very much for being experience in which he has served the edible oil sector for 10 years and had an experience of over 20 years in academics. I would like to request Shri R.K. Austin sir to please share his thoughts with us. बता दी ना कि आपका कंप्लीटेड नहीं तो सर अपने एल्कोहल डालने के बाद तब उसका स्टिकिंग वो तो थोड़ी देर में तो 5 मिनट वैसे तो टाइम थोड़ा और देना चाहिए अपन थोड़ा जल्दी कर रहे हैं तो देखो ना कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा सर वो नॉर्मली कर लेता है. We are proud to have 2 weeks Atal FDP in OIST. As we all know that AICT has sanctioned only 200 Atal FDP in over India, and we are one of them to get this Atal FDP. So once again, the motto of AICT is to inculcate the culture of learning new technology, and hence once again I thanks to AICT. I thanks to college management for providing all necessary support and guidance. I thanks to respected group director sir Dr. P.C. Bargale sir, director sir Dr. Rajesh K. Shukla sir for his consistent Engineering from GEC Bilaspur. Shri Austin has vast industrial and academic experience in which he has served the edible oil sector for 10 years and had an experience of over 20 years in academics. Smart manufacturing tools and techniques for Industry 4.2. We would like कैसे होता है तो अगेन गो फॉर दिस टूल्स में आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस और ऑप्शन में आपको आना है इंफ्रास्ट्रक्चर. Jitendra Pandit sir, along with other faculty members, staffs, and faculty participants from various institutes. Now I would like to request the dignitaries to please come forth and for the lamp lightning. तो जैसे कि आपकी थीम थी आप ऑलरेडी एक्वेंटेड हो गए हैं कल भी अपना थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था. So we all are acquainted with the theme. The theme is digital manufacturing, additive manufacturing, smart manufacturing tools and techniques. So first session Organized by the Department of Mechanical Engineering, Oriental Institute of Science and Technology. The flagship of Oriental Groups of Institution, Bhopal started functioning in the academic year 1995 to 1996. The institute is well known for. First of all, I would like to thank to AICT to sanction this Atal FDP to our institute. We are proud to have 2 weeks Atal FDP in OIST. As we all know that AICT has sanctioned only 200 Atal FDP in over India, and we are one of them to get this Atal FDP. So once again, the motto of AI. Advanced Certificate in Precision Engineering. Advanced Certificate in Precision Engineering. Or this course is a multidisciplinary study and practice of high accuracy engineering, designing and manufacturing. And this is a fully
प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रैक्टिस ओरिएंटेड वर्कशॉप बेस्ड कोर्स है विथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हमें वहां से एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेनर, इसलिए हर ऑब्जेक्ट में आपको ये 3 रेफरेंस प्लेन मिलेंगे, है ना। यहाँ पर प्लेन सिस्टम एक्टिव है, आप यहाँ पर एक्सिस सिस्टम। Our chief guest, Dr. Jay Prakash Murugesan sir, Speaker of the Day, Dr. Sharad Pradhan sir, Guest of Honor, Shri R.K. Austin sir, Group Director Oriental Group, Dr. P.C. Bargale sir, Director OIST, Dr. Rajesh Shukla sir, Head of Department Mechanical. So you can widen your knowledge in this area, and you can share this to your students and train your students, and your students will get benefited. They can get ये वायर चलना शुरू हुआ, यहाँ पर ये वेस्टेज होना शुरू हो गया। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू वायर, ये देख सकते हैं बहुत सारे प्रोफाइल में एमपी का लगता है। सर ये सेटअप हमारा जो सबसे एडवांस मॉड्यूल है M6 मॉड्यूल, उसका 2 टाइप की मशीन है। ये दोनों 5 एक्सेस मीडियम मशीन है, और सबसे ज़्यादा महंगी जो है DMG मॉड्यूल है। ये सब जर्मनी और पोलैंड और जर्मनी, पोलैंड, हाँ। DMG मॉड्यूल जो है जर्मनी में है मेन प्लांट, और पोलैंड में है जो CTS 100 जो है हमारी करने वाली। आप लोग अभी जाएंगे आपको पता चलेगा। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। रिजल्ट तो बहुत बड़े पूरा जर्मनी का। With us, Shri R.K. Austin sir as guest of honor, who is presently the head of department in the Global Skill Park City Campus, Bhopal, and also working as Deputy Director, Admission, Examination and Affiliation. He is also the principal of the Institute of Training of Trainees. Shri Austin has completed this Oriental Institute of Science and Technology Administration, and also the course coordinator for organizing such a current relevant course related to industry. And also this not only for industry but also I think for students. It will enhance. कि सांसें अंदर जा रही हैं और फिर बाहर की ओर आ रही हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कुराहट, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन पूरा आपका फेस और मस्तिष्क में हो। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। तो ये बिगिनर टूल्स, प्रोफेशनल टूल्स, इनमें से कुछ फ्री भी हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव चेक टिंकरकैड। आप लोगों में किसने टिंकरकैड देखा है ऑलरेडी? टिंकरकैड जिसने नहीं देखा है तो आप लोग अभी देख सकते हैं टिंकरकैड। फ्रेंड्स एक साथ दे दोगे। आपने एक को बेड के इस कोने पे लोकेट कर दिया, एक को बेड के इस कोने पे लोकेट कर दिया, अलग अलग जगह पे आपने लोकेट कर दिया, और आप कर सकते हो तो उसको आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो आपका स्केलिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, जो मैंने अभी किया। वो जो एक्चुअल डिजाइन था वो छोटा था। योग में दिल लगा हो जाता है उल्टा, संसार में दिल लगा देते हैं और योग में दिमाग लगाते हैं, भगवान में दिमाग लगाते हैं कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। और ये मान करके चलो कि दुनिया में जहां भी दिल लगाओगे सिवाय स्वयं के, सिवाय स्वयं मतलब क्या, स्वयं मतलब स्वयं में ही स्वयंभू है, खुद में ही खुदा है। भगवान के अलावा कहीं भी दिल लगाओगे दिल टूटेगा। आप चाहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख दिमाग दुनिया में लगाओ। मेहनत करते हो बहुत अच्छी बात है, घर परिवार दुनिया दिमाग से चलती है और धर्म दिल से चलता है। इसलिए हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान हो, अध्यात्म से आप जुड़े हुए हो। और स्पिरिचुअलिटी कैसे आती है? सोशल लाइफ से। सोशल लाइफ मतलब सोसाइटी में जैसे कहते हैं ना, जिसका जैसा रंग वैसा संग, जैसा संग वैसा रंग, ठीक है।
अच्छे लोगों के साथ रहें। कई बार देवेंद्र सर हमें सिखाते रहते हैं कि योग सीखना है तो किताबों से नहीं, यूट्यूब से नहीं, आप शिक्षक के पास जाओ। अर्थात समाज का मतलब यही है कि अच्छे लोगों के पास जाकर के आप कुछ सीखो। कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें कुछ सीखना है तो योग्य शिक्षक के पास जाओ। योग्य शिक्षक, बार बार आप ध्यान देना है, कोई शिक्षक की कमी नहीं है, लेकिन योग्य शिक्षक की भारी कमी है। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, भारी कमी है। तो आप जो है तीन चीजों पर ध्यान दीजिए हमेशा। हेल्थ, तीनों का संतुलन ही जीवन है। What is life? Life is all about the past experiences that you implement in present to make your future better. जीवन में सब चीज का संतुलन करते हुए, हेल्थ का भी, वेल्थ का भी, और सबसे इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस। सिर्फ पैसा पैसा ही नहीं, पैसा भी रहना जरूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, तो पैसा भी जरूरी है। स्वास्थ्य भी जरूरी है, और समाज में प्रतिष्ठा भी बहुत जरूरी है। तो पूरा धन हो गया, स्वास्थ्य भी, समाज में प्रतिष्ठा नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए जहाँ रहिए, जैसे भी रहिए, बढ़िया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। स्पिरिचुअलिटी आपकी जो है सोशल लाइफ से बनती है, और हेल्थ अच्छा रहेगा, फिजिकल लाइफ, और फिजिकल लाइफ कहाँ से बनती है? आपकी पर्सनल लाइफ से। वेल्थ जो है आपकी कहाँ से आती है? प्रोफेशनल लाइफ से। और हैप्पीनेस, लाइफ में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ कहाँ से आएगा? फिजिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ से। वेल्थ कहाँ से आएगा? प्रोफेशनल लाइफ, दैट विल कम फ्रॉम मेंटल लाइफ। तीनों चीज को कोरिलेट कर लीजिए। हेल्थ कहाँ से? फिजिकल, दैट मीन्स पर्सनल लाइफ। वेल्थ कहाँ से? प्रोफेशनल लाइफ। और प्रोफेशन कैसे होगा आपका? कि मेंटल एबिलिटी कितनी है। क्योंकि फिजिकल, क्योंकि शरीर में दो तरह से मेहनत होता है, एक गले के ऊपर और एक गले के नीचे। जीवन में कुछ वेल्दी बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो सर के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में आप देखिए, आटा बेचने वाला अमीर है कि डाटा बेचने वाला? डाटा। तो दिमाग वहां पे लगाइए। टेक्नोलॉजी जो है कॉस्टली है। अमेरिका कुछ नहीं करता है, हर चीज का पेटेंट करा लेता है। मेहनत आप करते हो, कमीशन वो खाता है। तो दिमाग लगा करके, क्योंकि दिमाग वाला ही तो जो है वेल्दी बन पाएगा। तो हेल्थ के लिए फिजिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ आप कैसे जी रहे हैं इस पे आपका फिजिकल डिपेंड करेगा, और ओवरऑल हेल्थ। फिर मेंटल लाइफ, मेंटल एबिलिटी आपकी कितनी अच्छी है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल लाइफ बनेगा, और वेल्थ आप कमा पाएंगे। यदि आपका प्रोफेशन अच्छा नहीं है और अमीर बन गए तो फिर पुलिस उठाकर ले जाएगी। आईटी वाले रेट डालेंगे कि इसके पास आया कैसे, क्लर्क होकर के इतना पैसा कैसे रख लिया। तो आपका प्रोफेशन तय करता है कि आप कितना वेल्दी हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दी हैप्पीनेस। ठीक ना? तो कई लोगों के पास हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी बहुत है, लेकिन अंदर से अभी देवेंद्र सर बता रहे थे कि मन से खुश रहना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो खुशी के लिए बंद ही कर दो सर, मेरी आवाज शायद इतनी है। तो खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लेवल पर आप बहुत अच्छे हो, दिल से आप अच्छे हो। दिल और दिमाग दो ही चीज तो है। संसार में दिमाग लगाओ, योग में दिल लगाओ, हो जाता है उल्टा। संसार में दिल लगा देते हैं और योग में दिमाग लगाते हैं, भगवान में दिमाग लगाते हैं कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। और ये मान करके चलो कि दुनिया में जहां भी दिल लगाओगे, सिवाय स्वयं के, सिवाय स्वयं में, मतलब क्या? स्वयं मतलब स्वयं ही नहीं। तो दिस इज इवन मोर डिफिकल्ट, बिकॉज टू क्रिएट कंप्लीटली सरियल एटमॉस्फेयर को आप कंप्यूटर जनरेट कर सकते हैं, बट ऐसा कि वो आपके एनवायरनमेंट में रहे और अनरियल ना लगे। अगर वो अनरियल लग रहा है तो फिर बेकार है। ये बीबीसी का है, बीबीसी सिविलाइजेशन से बताता है, मम्मी आती है, वो बड़ा मजा आता है। देयर इज अ मम्मी, इसमें एक मम्मी है। अभी आ जाओ, एक फोटो में First, this is the final product that we got from laser cutting as well as नहीं आ जाओ 3D फोटो printing. में। This first one, the base product is from the 3D printing, that is additive manufacturing.
The first step that we took while creating this workplace or an object was to develop a CAD model in the CAD software. According to your convenience, you could use AutoCAD, CATIA or SolidWorks or any other software. In the developing CAD software, this model was created and then it was converted into an STL file and then sent to a slicer like Ultimate Cura, where multiple slices has been done of this of this model, and then it is sent to the 3D printer that we have here, that is Adventure 4 from Flashcodes. And in a time of 2.5 hours, this product was created completely by 3D printing. The another that we have is an acrylic product where engraving and cutting is done by a laser cutter that we have here. A CO2 laser has been used to develop this very sample that we have here, in which two operations are done mainly, that is engraving and the second is cutting. The picture you see here is our founding chairman of Oriental Group, Dr. K. Thakral, sir. And the picture you see in it is actually the engraving that is done on the material, that is acrylic. And the finish, as you can see in the picture, is done by the laser, which is quite good considering the quality of the picture that we got. And this outer portion is actually the cutting part, that is the cutter that the laser did with using parameter like our speed as well as the intensity and maintaining how much we need according to our convenience. In engraving, we use high speed as well as low intensity lasers, and while cutting we need high intensity and low speeds. So according to this, this very product was made, and it is completely a memento to our founder, Mr. Thakral. So that is it. My colleagues, dear residents, आप सबको मेरा सैल्यूट है, तहे दिल से धन्यवाद है। आप सबने मिल करके इस प्रोग्राम को बहुत ही सफल और एक गरिमामयी जो है इसकी प्रस्तुति आपने दिया है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट को मैं धन्यवाद कहता हूं। साथ ही आपको मालूम होगा कि पूरे इंडिया में सिर्फ 200 कॉलेज को अटल एफडीपी दी गई थी। पूरे अटल एफडीपी 200 मिला था। आप देखेंगे लिस्ट में मात्र 6 कॉलेज को मैकेनिकल में दिया गया, 6 कॉलेज को, जिसमें कि हम एक हैं। इसका प्राउड हमें होना चाहिए कि वी आर दी पार्ट ऑफ दिस अटल एफडीपी। पिछले 10 दिनों में जो 6 दिन का लेक्चर था हमारा ऑनलाइन लेक्चर, उसमें भी काफी सपोर्ट मिला। काफी रिनॉन्ड इमिनेंट स्पीकर हम लोग जितना दी बेस्ट कर सकते थे, जगह जगह कांटेक्ट करके हम लोगों ने इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड ही स्पीकर अरेंज किए। ऑफलाइन में भी जो लेक्चर हम लोगों ने अरेंज किया, दी बेस्ट फैकल्टी नियर बाई भोपाल जो हो सकते थे, क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन था 100 किलोमीटर के अंदर, तो हम लोगों ने उसका भी पूरा कोशिश किया। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स बाहर से आए थे, लगभग 100+ पार्टिसिपेंट्स बाहर से आए थे, जिनको आउट करना पड़ा, क्योंकि उसमें एक क्लॉज है कि 100 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। एनीवे, आप सब आए, आप सबका सपोर्ट रहा। थोड़ा सा 1-2 काम और बाकी रह गया है, जिसमें कि एक तो आपका अभी जो असेसमेंट हुआ है ऑफलाइन, ये जरूर प्लीज आप अपने हैंड राइटिंग में दीजिएगा, ताकि अपने को भी आगे चलकर दिक्कत न हो, क्योंकि ये सब हमारे साइड से अभी बहुत सारे काम बाकी हैं जो अगले 10-15 दिन में होना है। तो ये मैं अपने एंड पे, मैं और मेरी टीम पूरी डिपार्टमेंट लगी हुई है इसमें, तो वो करेंगे। आपके एंड से ये रहता है एक फीडबैक देना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी बहुत कम अटल एफडीपी दी जाएगी कॉलेजों को,
तो हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यदि आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा फीडबैक दीजिएगा, तो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग मिलेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक अटल एफडीपी नेक्स्ट ईयर भी अपन लें। दूसरा हैट्रिक कर चुके हैं, लास्ट ईयर भी हम लोग का ई व्हीकल पे था, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो एक ऑलरेडी अटल एफडीपी कर चुके हैं, ये भी सक्सेसफुल रहा अपना, और आने वाले समय में भी जो है कोशिश करेंगे कि अटल एफडीपी मिले। एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम अपने को मिलने वाला है, पूरे इंडिया में 70 कॉलेज को मिला है, जिसमें कि हो सकता है कि एक अपना रहे, तो उसकी भी प्रयास जारी है। यदि वो सफल होते हैं तो शायद भोपाल में हम इकलौता ही रहेंगे, तो उसमें भी हम आपको बताएंगे। एक ही दिन का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है, अभी चूंकि मिला नहीं है इसलिए लूज हो जाता है, वो लूज हो जाता है, कहीं ना कहीं से निकलने लगता है। उसके बाद भी एकदम से नहीं निकलता है, आपको डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है। छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आप स्क्रैप करेंगे तो थोड़ा आराम से निकल आता है, अदरवाइज बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब शुरू में हम लोगों ने आया था तो हम लोगों को इसका आइडिया ही नहीं था, तो हम लोगों ने एक प्रिंट निकाला और वो जब उसके साथ कर रहे थे ये सब, तो राफ्ट बनाया था उसमें, तो वो प्रोडक्ट तो निकल के आ गया, वो राफ्ट वहीं रह गया। अब वो राफ्ट वहीं रह गया, वो राफ्ट वहीं लगा रहा। तो अब हमें यही समझ नहीं आया, फिर हमने उस कंपनी वाले को फोन लगाया, हमने कहा भाई वो चिपका ही रह गया, वो हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। Information regarding Industry 4.0, and all the sessions conducted were very good, and the resource person were very informative and knowledgeable, and the organizing committee, this YST was very good, and the coordinators had conducted this FDP program very well, and I hope the more programs will be conducted by this YST, and I will be the attendee for this program also in future also. Thank you. also हमने फाइल यूज किया विभाग के Right now it is a training part. खोल के मिले खोल के मिले investigation of emissions, complications. And finally, they have to after these all exercises, they have to make this is the operation. Any other operation.
क्वालिटी देखोगे, देखो कैसा है। Development program on smart manufacturing tools and techniques for Industry 4.0 has been organized by Mechanical Department, Oriental Institute of Science and Technology, under the sponsorship from AICT Training and Learning Atal Academy. Throughout the second week, many educators have within the event and delivered their speech regarding the recent changes that came with Industry 4.0, starting from the day one, where Dr. Is Agrawal नॉर्मल सैनिटाइजर ये नीचे ये वाला है सर। हाँ ये यही था ऊपर, ये वाला ऊपर, ये ऊपर इसमें चिपका हुआ नहीं है तो बस ये इसमें कि नेटिंग कर देता है ना तो वो एवेशन भी आ जाता है और निकल भी आराम से जाता है। Knowledge. It is very informative session by especially today industrial visit we have gone through. It's very informative for all of us, and I have also attended online program as well as offline training sessions. This FDP. This online training program schedule on Wirecut idiom is a very useful session for me, as well as today industrial visit is also practical knowledge providing session. Is today's very valuable session. Yes, 2 weeks faculty development program organized by OIST, which is sponsored by Atal AICT, is very informative for the current scenario, which is the topic is Industry 4.0. As we all are mechanical engineer. Firstly, thank you for inviting us to join this event. Basically, the need of Industry 4.0 that can be very critically analyzed and elaborated by the keynote speakers, which is very informative to the basically faculty members as well as the student or the research oriented guys like PhD scholars. So basically in this session we have learned about the techniques like 3D printing, the critical components, designing software, slicing software, or many other things that can be covered in this session, which are very informative, and the knowledge and the key depth of the speakers are very good in their subjects and fields, which can be elaborated very well in the sessions, and so these things that can be learned by us is very informative. Thank you. Many eminent personalities have came in the event and delivered their speech regarding the recent changes that came in the Industry 4.0 from day one, where we were given brief overview on Industry 4.0. Later, a lecture on software used in 3D printing. On day 2, we were told about recent studies that came since Industry 4.0. We were told about various aspects on smart manufacturing using 3D modeling. On day 3, we received a brief introduction about the industry's smart machineries, which included 3D printers, CNC lasers, CNC router, 3D scanner, and many more. Later, we were informed regarding the concerns about upcoming issues that occurred recently within the industries. On day 4, we had hands-on training on all the smart as well as to students. First of all, very thank you to organization OIST. He has started this 2-week faculty development program for Industry 4.0. During this 2-week program, we have learned many more new things and new techniques which are using in present scenario and further implemented
industrial organizations. During these new techniques, manufacturing tools and techniques, here we have learned new 3D printing techniques, new softwares, new revolutions which is using inviting us to join this event. Basically, the need of Industry 4.0 that can be very critically analyzed and elaborated by the keynote speakers, which is very informative to the basically faculty members as well as the student or the research oriented guys like PhD scholars. So basically in this session we have learned about the techniques like 3D printing, the critical components, designing software, slicing software, or many other things that can be covered in this session, which are very informative, and the knowledge and the key depth of the speakers are very good in their subjects and fields, which can be elaborated very well in the sessions, and so these things that can be learned by us is very informative. Thank you. Give a very big thank to OAST and as well as Atal FDP. So yes, this session is really very informative. Whatever sessions I have gone through, they are really very informative. And I actually a very less known person of regarding Industry 4.0. So now I can say I have learned a lot about 4.0, and I have gone through a very big gap, which are I can understand, I can see. There are existence of a very big gap in between our students and whatever we are learning and whatever the industries are following. So I hope somehow we have tried to fill that gap so that students may able to learn what are the current scenario is existing in our industries. So I'm really very thankful to YST and Atal FDP also. So I'm hoping in future also that this kind of industry-oriented FDPs will conduct by many organizations as well as OST also. So thank you so much for calling. This 2 weeks faculty development program organized by OIST, which is sponsored by Atal AICT, is very informative for the current scenario. Which is, the topic is Industry 4.0. As we all are mechanical engineer, we know that how we start from IR 1 to IR 2, IR 3, and now we are in IR 4, Industrial Revolution 4.0, in which basic need of industry, which is how to reduce cost and manpower, which is depending on the Industry 4.0. And this 2-week FDP is very informative and very useful for all of us. I am very thankful to OIST to organize this type of session. Thank you very much. टाइम पे प्रिंट पे लगाया तो जैसे मेरा ड्राफ्ट गड़बड़ करने लगा मुझे समझ में आता है हाँ यार गड़बड़ हो रही, इसको फिर से रीस्टार्ट करो. इट इज लाइक दिस. ठीक है. नाउ हम लोग एक डमी प्रिंट निकालने की कोशिश करेंगे. भी ये देखिए, ये जो है ये सॉफ्टवेयर जो है ये दूसरा सॉफ्टवेयर वो जो मैं आपको बता रहा हूँ. This 2-week FDP give a very valuable knowledge. It is very informative session, by especially today industrial visit we have gone through. It's a very informative for all of us, and I have also attended online program as well as offline training sessions. This FDP, this online training program schedule on Wirecard EDM is a very useful session for me, as well as today industrial visit is also practical knowledge providing session. Is today's very valuable session. So I am very much thankful to OIST Bhopal, my colleague institute, OIST coordinator. I am very much thankful to coordinator, HOD Mechanical, co-coordinator Pandit sir, for organizing such a valuable FDP on a need of the current scenario, Industry 4.0. Thank you.
Please come forward. Birla sir. आजे दोनों आजे बन रही Sir. Singh sir. Mr. Kusmaka Shukla sir. Mr. Anish Kodre sir. Thank you, sir. Thank you. Mr. Shyam Kumar Barode sir. Mr. Aditya Kumar Litoria sir. Pandit sir. Mr. To Dias and all the dear colleagues, participants of this 2 weeks faculty development program on smart manufacturing tools and techniques for Industry 4.0. As far as the reviews of this FDP are concerned, we have already heard all the participants. They have given wonderful reviews about all the sessions, and that's very heartening to know that this has been the case. And I also like to thank the organizers. Warm appreciation for HOD Mechanical Khare sir, for the coordinator Jiten sir, and Professor Pankaj for organizing this wonderful FDP on a very relevant topic as such. And the best part of these workshops that should be the case, that they need to be hands-on, and that is the best part about this workshop, that it was truly hands-on. Apart from all the sessions that were being conducted, very informative sessions from very renowned speakers, and experts that came were from very reputed organizations, both from academia and industry. My colleagues, dear residents, आप सबको मेरा सैल्यूट है, तहे दिल से धन्यवाद है। आप सबने मिल करके इस प्रोग्राम को बहुत ही सफल और एक गरिमामयी जो है इसकी प्रस्तुति आपने दिया है। आप लोगों का सहयोग, आप लोग का सपोर्ट को मैं धन्यवाद कहता हूं। साथ ही आपको मालूम होगा कि पूरे इंडिया में सिर्फ 200 कॉलेज को अटल एफडीपी दी गई थी। पूरे अटल एफडीपी 200 मिला था। आप देखेंगे लिस्ट में मात्र 6 कॉलेज को मैकेनिकल में दिया गया, 6 कॉलेज को, जिसमें कि हम एक हैं। इसका प्राउड हमें होना चाहिए कि वी आर दी पार्ट ऑफ दिस अटल एफडीपी। पिछले 10 दिनों में जो 6 दिन का लेक्चर था हमारा ऑनलाइन लेक्चर, उसमें भी काफी सपोर्ट मिला। काफी रिनॉन्ड इमिनेंट स्पीकर हम लोग जितना दी बेस्ट कर सकते थे, जगह जगह कांटेक्ट करके हम लोगों ने इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड ही स्पीकर अरेंज किए। ऑफलाइन में भी जो लेक्चर हम लोगों ने अरेंज किया, दी बेस्ट फैकल्टी नियर बाई भोपाल जो हो सकते थे, क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन था 100 किलोमीटर के अंदर, तो हम लोगों ने उसका भी पूरा कोशिश किया। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स बाहर से आए थे, लगभग 100+ पार्टिसिपेंट्स बाहर से आए थे, जिनको आउट करना पड़ा, क्योंकि उसमें एक क्लॉज है कि 100 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। एनीवे, आप सब आए, आप सबका सपोर्ट रहा। थोड़ा सा 1-2 काम और बाकी रह गया है, जिसमें कि एक तो आपका अभी जो असेसमेंट हुआ है ऑफलाइन, ये जरूर प्लीज आप अपने हैंड राइटिंग में दीजिएगा,
ताकि अपने को भी आगे चलकर दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सब हमारे साइड से अभी बहुत सारे काम बाकी हैं जो अगले 10-15 दिन में होना है। तो ये मैं अपने एंड पे, मैं और मेरी टीम पूरी डिपार्टमेंट लगी हुई है इसमें, तो वो करेंगे। आपके एंड से ये रहता है एक फीडबैक देना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी बहुत कम अटल एफडीपी दी जाएगी कॉलेजों को, तो हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यदि आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा फीडबैक दीजिएगा, तो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग मिलेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक अटल एफडीपी नेक्स्ट ईयर भी अपन लें। दूसरा हैट्रिक कर चुके हैं, लास्ट ईयर भी हम लोग का ई व्हीकल पे था, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो एक ऑलरेडी अटल एफडीपी कर चुके हैं, ये भी सक्सेसफुल रहा अपना, और आने वाले समय में भी जो है कोशिश करेंगे कि अटल एफडीपी मिले। एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम अपने को मिलने वाला है, पूरे इंडिया में 70 कॉलेज को मिला है, जिसमें कि हो सकता है कि एक अपना रहे, तो उसकी भी प्रयास जारी है। यदि वो सफल होते हैं तो शायद भोपाल में हम इकलौता ही रहेंगे, तो उसमें भी हम आपको बताएंगे। एक ही दिन का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है। अभी चूंकि मिला नहीं है इसलिए पहले ज्यादा हम बताना ठीक नहीं समझते हैं। तो एनीवे, दूसरा चीज है, जो बुक आपको दिए हैं अभी एज ए रिवार्ड या ये गिफ्ट जो भी समझिए, मेरा निवेदन है कि इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बुक खोजने में मुझे और पंकज सर को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। लगभग भोपाल के कम से कम नहीं भी तो कम से कम 30 से 40 दुकान, बड़ी बड़ी दुकान खोजने के बाद ये बुक मिली है हम लोग को। तो एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि अभी आपने 10 दिन में जो पढ़ा है, आई थिंक ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बुक में है। तीसरा जो अहमद सर ने बताया आइडिया, इसके अलावा भी जब आपको समय मिलता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आकर के आइडिया देखिए। ये भी लगभग 1 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि गिरीश खरे सर भी इन्वॉल्व हैं, हमारे मनीष सावले सर हैं, और अहमद सर तो डायरेक्ट रूप से जो है, और इसके कोऑर्डिनेटर में पंकज सर हैं। तो ये लोग देखते हैं, आप आकर के कभी देखिए, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें जो है बनी हुई है, और आपके सामने इसका डेमो भी है। तो हम लोग इसी तरह से कहीं ना कहीं जुड़े रहें। अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको प्लीज छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी बची हुई है या कुछ हमको जरूरत पड़ेगी आपके एंड से, तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल करूंगा। तो आज यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर मिलेंगे आपके गुड फीडबैक के साथ। थैंक यू वेरी मच। डायमेंशन को डाउन की ये हम इसको ले आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर कैसे रहेगा नहीं पहला कौन और डायमेंशन देने के